Sesame Street, as you all know, that is a cartoon series, and this cartoon series is actually made for the children's educational purpose. It was made by the American people and produced by the Sesame Workshop. And this series was created by John Gansconi and Lloyd Morissette. The first episode of Sesame Street was on aired on November 10 in 1969, and it was aired on the US National Public Television PBS. Until now, 50 seasons and 4,500 episodes have been broadcasted. What was the objective of the this cartoon series for the children? It was made to help prepare all children for school, including those children who might otherwise be considered at risk. ये जब बनाई गई जो कार्टून सीरीज बच्चों के लिए, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम बच्चों के लिए जो तमाम बच्चों के लिए ये बनाई गई थी, और उन तमाम बच्चों में वो बच्चे जिनकी जो है एजुकेशनल कैपेसिटी थोड़ी लो है या पुअर है, तो उसको इन्हांस करने के लिए कि जब वो अपना स्कूल शुरू करें तो उनमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने मैच्योर हो चुके हों कि वो अपना स्कूल सक्सेसफुली शुरू कर पाएँ। In the first season of Sesame Street, content was developed in 5 areas: social, moral, and affective development, language and reading, mathematics and numerical skills, reasoning and problem solving and perception. जब इसका पहला सीज़न ऑन एयर किया गया, तो उसमें इन 5 जो है थीम्स के ऊपर पर्टिकुलरली फ़ोकस किया गया कि ये जो इसके एपिसोड हैं, उसमें ये 5 जो है एरियाज़ हैं, वो उसमें फ़ोकस करके बनाया गया इन एपिसोड्स को, ताकि जब बच्चे इनको देखें तो इन उनमें ये 5 स्किल्स डेवलप हों। उनकी सोशल और मॉरल डेवलपमेंट हो, उनकी लैंग्वेज और रीडिंग एबिलिटी बढ़े, उनकी मैथमेटिक और न्यूमेरिकल स्किल इम्प्रूव हो, और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी वो क्रिएट हो। इन लेटर सीजन, curriculum expanded to cover topics ranging from science to health to race relations. मगर जो इसके आने वाले सीजन्स थे, उसमें इन 5 एरियाज़ के साथ-साथ जो है साइंस के ऊपर भी प्रोग्राम्स बनाएँगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे भी प्रोग्राम बनाएँगे, और जो है एथिकल इश्यूज़ हैं लाइक द रेशियल जो रिलेशनशिप्स हैं, जो अमेरिकन सोसाइटी के, उनके ऊपर भी रोशनी डाली गई और बच्चों को अवेयर किया गया जो रेशियल इनइक्वालिटी है या जो रेशियल रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के कंटेंट की बात करें, तो दिस प्रोग्राम कंबाइंस लाइव एक्शन, sketch comedy, animation and puppetry, and these are some renowned character of Sesame Street, in which Bert, Elmo, Zoo are the renowned characters. When we talk about the model of Sesame Street, so we come to know that there are 3 areas: production, content and research. When we talk about the model of Sesame Street, Sesame Street production team specifically gives the importance to the research. कि ये जब कंटेंट डेवलप करते थे, तो एक तरफ तो प्रोडक्शन का आपकी पूरा एक जो है डिपार्टमेंट है, और जो कंटेंट डेवलपमेंट को गाइड करता है, तो दूसरी तरफ जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन और कंटेंट डिपार्टमेंट को भी गाइड करता है कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। और जब ये रिसर्च कंडक्ट करती थी इनका जो है टीम, तो वो दोनों किस्म की रिसर्च, फॉर्मेटिव और समेटिव, दोनों किस्म की रिसर्च कंडक्ट करते थे कि के भी प्रोग्राम ऑन एयर जाने से पहले कि किस तरह के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, वो इस चीज़ को डिस्कस करते थे अपनी टीम के साथ-साथ भी, और जो है सोसाइटी के मेंबर्स के भी, बच्चों को किस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और जब वो प्रोग्राम ऑन एयर जाते थे, तो उन प्रोग्राम्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट की जाती थी कि ये जो प्रोग्राम है, ये कितने इफ़ेक्टिव हैं फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग।
और जब हम इसके ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस की बात करते हैं कि भी डज सेसमे स्ट्रीट impact children's learning or not, तो हमें पता चलता है a lot of studies have been conducted to see the role of Sesame Street program in enhancing children's learning. And in this regard, Shelman M. Fish, a renowned cognitive development psychologist, published a book titled Children's Learning from Educational Television, Sesame Street and Beyond in 2004. In this book, he has discussed all those studies conducted to investigate the role of Sesame Street in enhancing children learning. And he reviewed all available research in his book. Recently, in 2013, an article titled Effects of Sesame Street, a meta analysis of children's learning in 15 countries, published in Journal of Applied Development Psychology. And the authors of this article concluded that this educational program has significant effect on children's learning. यानी ये जो एजुकेशनल टेलीविजन कार्टून सीरीज थी जो कि पिछले 50 सालों से ज़ायद अरसे से जो है वो ऑन एयर की जा रही है, और अब ये यूट्यूब पे भी है और और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, और शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखी हो। तो जो एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, जो रिसर्च है, वो ये बताती है कि जो बच्चे इसको देखते रहे हैं, ये जो सीरीज़ है, उनकी लर्निंग में हेल्पफुल साबित हुई है ओवर द ईयर्स।